मुझे मालूम है ये तो देश की निवडणुका है, ये कोई पंचायत की निवडणुका नहीं है, विधानसभा की निवडणुका नहीं है। और इस बार इस देश की निवडणुका में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देश में फिर एक बार जीत के देने के लिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। पर दोपहर में 2:30 बजे सभा हो रही है और इस दोपहर से जो 12 बजे से रैली अभी तक स्टार्ट है, मुझे लगता है 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। इस रैली में हमारी माननीय रक्षा मंत्री जी आपसे बात करेगी, लेकिन मैं कुछ थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। इस बार की निवडणुका हमें बहुत ही इम्पॉर्टंट है और फिर भी हम म्हाका दिसता गोंयांतलो प्रत्येक जण कारवार येता आणि कारवारांतलो प्रत्येक जण गोंयान वयता। आयदर त्यांचे आम्ही तशी म्हणटा की रोटी बेटी रिलेशन्स असतात। गोंयांतले कित्येक जणांचे सगळे सोयरे कारवारात आसतले, कारवारकारांचे गोंयान आसतले। कारवारांतले कितलेशेच जण नोकरेच्या निमित्तान गोंयांत वता। मॅक्झिमम नॉट ओनली कारवार बट उत्तर कन्नडा मतदारसंघातल्यान, ज्या मतदारसंघातल्यान अनंत कुमार हेगडे जी निवडून येता त्या पुराय बॉर्डर जी असा, खानापूर आसतले, कारवार आसतले, परत तुमचे जॉयडा आणि बाकी सगळे हो कंप्लीटली बेल्ट जो असा हो गोंया कडेन कनेक्टेड असा। 1947 भारत देश स्वतंत्र जालो म्हटल्यार गोंय मुक्ती जी असा ही 1961 जाली। गोंय मुक्ती पासून आतापर्यंत कारवाराचे आणि गोंयचे नाते जे असा हे घट्ट जाला आणि ते आनीकूय घट्ट जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। हांव थोडोच वेळ पयलीं मंत्री महोदय अनंत कुमारजी कडेन उलयतालो। माननीय मंत्रीजीन म्हटलें की आमचे रिलेशन आनी बॉन्डिंग आनीक वाडपा खातीर आमी आयदर गोंयची बाउंड्री काणकोण आसतली किंवा तेवटेन गोंयची बाउंड्री म्हणजे म्हाजो मतदारसंघ जो लागता सांखळी आनी खानापूरच्या तेकोन आशिल्लो, ह्या दोनूय भागात आमी विचार करता आसतना वेगळ्या पद्दतीन आयदर समथींग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री किंवा स्किल बेस्ड इंडस्ट्री ही हाडप अत्यंत गरजेची आसा। कित्याक तर कारवार आनी गोंय ह्या ग्रामीण भागांतल्या लोकां खातीर तर आमी तेंच्या हाताक काम दितले आसात, तर त्या हाताक काम आमी ही इंडस्ट्री हाडल्या उपरांतूच दिवंक शकता। आनी हांव माननीय मंत्रीजीक सांगपाक सोदता की हे प्लॅन सक्सेसफूल करपा खातीर गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तुमच्या बरोबर सदोदीत आसतलो। आमच्या ह्या कारवार आनी पुराय ग्रामीण भागांतल्या लोकां खातीर मोठ्या प्रमाणाची उदरगत संद ही आमी दोगूय मेळून करपाक शकतले। त्या खातीर निश्चितच म्हाका दिसता तुम्ही सगळे जण तांकां साथ दितलेच। साथ देते वक्त